So here we will be discussing about the management of diabetic ketoacidosis, which is an emergency condition. So initially आपको ABCDE करना है, which stands for airway, breathing, circulation, disability, exposure. Disability कैसे जज करेंगे? With the help of Glasgow Coma scale. एक्सपोजर में हमको देखना है डिहाइड्रेशन तो नहीं है या फिर कोई इन्फेक्शन का साइन तो नहीं है. तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको ABG और VBG देना है, रैंडम ब्लड ग्लूकोज, सीरम कीटोन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम का कंसनट्रेशन कितना है ये हमें जानना ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है आई विल डिस्कस लेटर इन दिस वीडियो. देन यूरिया, क्रिएटिनिन, CBC, ECG, चेस्ट एक्सरे इफ नीडेड, यूरिन कीटोन्स, सीरम ऑस्मोलैलिटी, कल्चर्स इफ इन्फेक्शन इज सस्पेक्टेड. सो द मैनेजमेंट बिगिंस इमीडिएटली. तुरंत आपको फ्लूइड रिससिटेशन करना है. इफ़ द पेशेंट इज़ इन शॉक देन 1 to 1.5 लीटर नॉर्मल सलाइन आपको 1 आवर में तुरंत देना है. अगर पेशेंट शॉक में नहीं है तो फिर फर्स्ट आवर में नॉर्मल सलाइन 50 to 20 ml पर kg आपको देना है, एंड नेक्स्ट 2 to 4 आवर्स में नॉर्मल सलाइन 250 to 500 ml पर आवर के हिसाब से आपको चलाते रहना है. व्हेन टू स्विच N/2S और हाफ सलाइन. सो इफ़ द करेक्टेड सोडियम इज़ हाई और नॉर्मल, तो अगर सीरम सोडियम लेवल बहुत ज़्यादा आता है, मोर देन 145 आता है, तो फिर आपको N/2S देना पड़ेगा. देन सीरम इलेक्ट्रोलाइट हम सबसे पहले क्यों कराए थे? बिकॉज इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ पोटेशियम इज़ लेस देन 3.3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो इन दिस केस आपको इंसुलिन शुरू नहीं करना है. फर्स्ट यू हैव टू गिव KCL 20 to 40 मिली इक्विवेलेंट पर आवर जब तक कि सीरम पोटेशियम मोर देन 3.3 नहीं हो जाता. इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ सीरम पोटेशियम इज़ 3.3 to 5.3 then 20 to 30 मिली इक्विवेलेंट KCL in each liter of IV fluid you have to give, and here you can start insulin. If potassium is more than 5.3 milli equivalent per liter, then do not give potassium, start insulin and monitor potassium every hour. So talking about insulin therapy, there are two options. Option A is preferred. IV regular insulin infusion we have to give 0.1 unit per kg IV bolus, then 0.1 unit per kg per hour infusion. Then option B is हम बोलस नहीं दे रहे हैं, वी विल स्टार्ट इमीडिएट 0.14 यूनिट्स पर kg पर आवर इन्फ्यूजन. सो हमारा टारगेट क्या रहेगा? टारगेट इज़ टू ड्रॉप द ब्लड शुगर लेवल बाय 50 to 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर आवर. अब जब ग्लूकोज का कंसनट्रेशन लेस देन 200 या 250 हो जाता है तो फिर हमको नॉर्मल सलाइन से फ्लूइड को D5 हाफ NS पे शिफ्ट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 150 to 250 ml पर आवर एंड कंटिन्यू इंसुलिन अंटिल एसिडोसिस रिजॉल्व्स. बाइकार्बोनेट हमको कब लगेगा? इफ़ pH इज़ लेस देन 6.9 देन 100 मिलीमोल सोडियम बाइकार्बोनेट इन 400 ml स्टेराइल वाटर प्लस 20 मिली इक्विवेलेंट KCL ओवर 2 hours वी हैव टू गिव स्टैट. अवॉइड अनलेस सीवियर एसिडोसिस इज देयर. Monitoring is done every hourly. You have to measure the blood glucose levels, electrolyte levels, which is sodium, potassium and bicarbonate every 2 to 4 hours. ABG and VBG every 2 to 4 hours. Vitals you have to measure continuously, and urine output, ECG if potassium is abnormal. Identify and treat the trigger signs if infection is there, missed insulin is there, myocardial infarction, stroke, pancreatitis, pregnancy, or alcohol or any drug ingestion history is given by the patient. Do the culture, chest x-ray, ECG as needed. So resolution criteria पे हम जब आते हैं तो फिर when we have achieved blood glucose level less than 200 mg per dl, pH more than 7.3, bicarbonate more than 15 milliequivalent per liter, and anion gap is closed less than equal to 12. Transition to subcutaneous insulin. When we are talking about this transition, so subcutaneous basal insulin we have to give. Examples are glargine or detemir 1 to 2 hours before stopping IV insulin. Then start routine bolus insulin regimen. So if we summarize this, so we have to first assess the ABC, then we have to do the investigations. Fluids may we have to give first normal saline, then we have to shift half NS or dextrose 5%. Correct potassium, it is very much important, and you have to start insulin after correcting the potassium. Add dextrose when blood glucose is less than 200.
Hourly glucose monitoring and 2 to 4 hour electrolyte monitoring is very much necessary. Treat the underlying cause. Shift to subcutaneous insulin after diabetic ketoacidosis resolution. For more videos, kindly comment.